हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके सामने आ गया हूँ नए टॉपिक के साथ, स्लोप ऑफ अ लाइन। दोस्तों, अभी स्लोप कैसे करके लाइन का फाइंड आउट करना है तो देख लेते हैं। पहले मुझे दो पॉइंट दिए हो, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, वी कॉल से ए, द पॉइंट इज x1 y1 and here the second point we call say b, x2 y2. So we have 2 points and this is a line L, right? So the slope of a line which passing through these two distinct points is m is equals to, that is the formula for that, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This topic. Another form is, the slope of a line is, another form is like this. So we have to here y-axis, here obviously this is x-axis, and here 2 points A, and here the point B, x2 y2, here the point A, x1 y1, right? So this is line L. Okay, so we have to put this point C, third point C. So what is the component of this third point? So that is the importance. So this is obviously, this is extend this one. So y component is, x component is same, x2, and here, so this line is extend to this. So here y component is same like y1. So we did this one, x2 y1. तो अभी क्या होता है, यहाँ पे जो भी डिफरेंट होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये चीज है दोस्तों, राइट? और यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, ओके, y कंपोनेंट आर सेम, सो x2 माइनस x1, ये डिफरेंस यहाँ पे है दोस्तों। ये दोनों का एंगल थीटा आप लेते हो दोस्तों, तो क्या मिलता है मुझे, tan थीटा, दिस इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड BC or divide by AC. So what is the BC? BC is y2 minus y1 upon AC means x2 minus x1. But this is what? This is this. M is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So finally we get this is M. So this is M. So remember this formula, number one, this one and this one. That means what we get, M is equals to tan theta is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये चीज है दोस्तों। तो जब ये लाइन की का आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो आप m is equals to tan theta, जो ये एंगल दिया हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, m equals to tan theta. यदि एंगल में नहीं दिया दोस्तों, so 2 points are given, so you have to use component y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो यहाँ पे मुझे दो फॉर्मूला मिलती है, m is equals to tan theta and m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये चीजें है दोस्तों, जब ये हमें स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप का सिंबल है स्मॉल m, राइट? ये चीज है दोस्तों। अभी मेरे पास और दो क्वेश्चन है। इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू x axis, so what happen? And another question is, if line L is perpendicular to y-axis, so what we have? So this is the, obviously this one is y-axis and this is x-axis, and my question is that line is perpendicular to x-axis means this one. So this is line L which is perpendicular to x-axis, right? And suppose here we have 2 points A, x1 y1, so here B point, so obviously x component are same, x1 y2, so we have noticed that m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So here m is y2 minus y1 upon x2 minus x1. We have already this formula. Now x component are same, y component are different. That means what happened, this term standing to 0, that means this is what, infinity, that means undefined. M is equals to infinity is equals to undefined.
सो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। क्या होता है, इफ द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दैट मीन्स आप दूसरे वर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या, इफ लाइन एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस then the slope is undefined, that means infinity, just a symbol, so you can't found it। ये चीज है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि इफ लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, सो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस में क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। वाई एक्सिस एंड दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, रियल लाइन एल। So here suppose if we have 2 points A, x1, y1, and again here another point B. Let us say in y-axis, so y component are same, right? X component change, x2 and y1. So here y1. So if you put the values of here, m is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this portion, which portion is same? This one, numerator, okay, because y1, so y1 minus y1 is 0, right? 0 upon x2 minus x1, that means answer will be 0। और यहाँ पे क्या था, x component are same, x1 minus x1, so this portion is 0, that means undefined। So what we get finally, therefore m is 0। so ये चीजें है दोस्तों, ठीक है ना। आप लाइन का जब स्लोप फाइंड आउट करते हो दोस्तों, तो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, एक ये फॉर्मूला है। जब आपको कंपोनेंट दिए हो, जब आपको एंगल दिया हो, तो m इज इक्वल टू tan थीटा, वो भी फॉर्मूला है दोस्तों। जब लाइन आपकी परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, दैट मींस पैरेलल टू y एक्सिस and perpendicular to x axis, so m is undefined, that means you can't find it, right? Or if line L is perpendicular to y axis, that means parallel to x axis, so slope is 0। और एक और एक चीज है दोस्तों, L की स्टैंडर्ड फॉर्मूला, L इज इक्वल्स टू, कोई भी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्मूला है L ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और उसमें स्लोप m इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b। ये भी चीज है दोस्तों, ये भी आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। एक ये चीज, यहाँ पे एक ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी, ये चीज है दोस्तों, ठीक है ना। जब भी कोई लाइन दी हो और उसका आपको स्लोप फाइंड आउट करना है दोस्तों, सो m इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b। तो हमने कई सारे केसेस यहाँ पे देखे। पहले दो कंपोनेंट दिया हो तो दिस, एंगल दिया हो तो दिस फॉर्मूला, लाइन यदि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रही तो आप नहीं फाइंड आउट कर सको, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस रहा तो हमको 0 दिखाना पड़ेगा, और कोई लाइन ही दी हो तो उसका स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b। देख लो, इतनी सारी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। यहाँ पे किसी को भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो एक नजर यहाँ पे लगा दो दोस्तों।